स्टूडेंट, माई सेल्फ शिवम गुप्ता। आपका स्वागत है आपके नए यूट्यूब चैनल जीएस इन्फिनाइट। आज का जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और आइडेंटिटी, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं जो कि आज मैं डिस्कस करूंगा। टॉपिक है आपका ट्राइगोनोमेट्री एंड ट्राइगोनोमेट्री रेशियोज and identity. Here this is the triangle, right angle triangle. This is A, this is B, this is C. At right angle triangle at B. Now this is the angle theta, so this is the perpendicular, this is hypotenuse, and this is the base. There are 6 trigonometrical ratios. There are 6 trigonometrical ratios. First is sine. Make an angle theta, so sine theta equal to perpendicular upon hypotenuse, and second is cos theta, base upon hypotenuse, and third is tan theta equal to P upon B, यानी perpendicular upon base. Here now cosec theta equal to H upon P, and sec theta equal to H upon B, and cot theta equal to B by P. यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है, सो कॉपी इट. So we know that the first identity is reciprocal identity. Reciprocal identity. Here cosec theta into sin theta equal to 1, sec theta equal to sec theta into cos theta equal to 1, tan theta dot cot theta equal to 1. We know that cosec theta equal to 1 upon sin theta. From here we can write, and sec theta equal to 1 upon cos theta, and cot theta equal to 1 upon tan theta. This is the reciprocal identity. Now सेकेंड प्रॉपर्टी है स्क्वायर प्रॉपर्टी या स्क्वायर रिलेशन. स्क्वायर रिलेशन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज quotient relation. Now third property is quotient relation. Cot theta equal to cos theta upon sin theta, and tan theta equal to sin theta upon cos theta. And fourth relation, 1 plus tan square theta equal to
sec square theta and 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. Now this is the relation. The trigonometric, the trigonometrical ratios has real numbers, so it has no unit. इम्पॉर्टेंट नोट डाल के लिख लीजिएगा इसको, इट हैज नो यूनिट। जो हमने आपको रिलेशंस बताए हैं उसका चलिए प्रूफ करते हैं। पहला जो प्रूफ है वो स्क्वायर रिलेशन का है। नाउ द स्क्वायर रिलेशन प्रूफ है स्क्वायर रिलेशन का। Now we have a right angle triangle at B. Now ABC. Now making an angle theta from here, from C. So sin A equal to P by AB upon AC and cos A equal to BC upon AC. Now first and second, now squaring sin square A plus cos square A equal to AB upon AC का स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का स्क्वायर AB अपॉन BC स्क्वायर। We know that Pythagoras theorem hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square. Here AB square upon AC square plus BC square upon AC square. Here AB square plus BC square. From here, from star we have AB square plus BC square equal to AC square. Now numerator and denominator will be same, so cancel out each other. Now sin square A plus cos square A equal to 1. This is the proof of the square relation. Now proof of 1 plus tan square theta equal to sec square theta and 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. We know that the square relation cos square theta plus sin square theta equal to 1. हम जानते हैं यहाँ पे tan आ रहा है, ठीक है, from star divide by cos theta, because we know that the quotient relation says sin theta upon cos theta equal to tan theta. Now star divided by cos square theta, we get cos square theta upon cos square theta plus sin square theta upon cos square theta upon 1 upon cos square theta. Here cos square cancel 1 and sin upon cos yani tan theta from the quotient relation. Here we put in the place of sin square theta upon cos square theta we will put tan square theta and reciprocal draw 1 upon cos
and sec square theta. Now this is the relation. Now the proof of 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. Here we know that the square relation cos square theta plus sin square theta equal to 1. Here this is cot theta. We know that if we divide the equation by cos square theta, then no, now divide the whole equation by the sin theta, then cos upon sin, we know that cos upon sin will be cot from the quotient relation. Now the star equation divided by sin square theta, here cos square theta upon sin square theta plus sin square theta upon sin square theta upon 1 upon sin square theta. Here cos theta upon sin theta, we know that cot square theta. Here sin cancel, 1 equal to 1 upon sin जो होता है वो cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है. कहीं कहीं पे cosec स्क्वायर थीटा plus here will come minus, then equal to, in the place of cosec square theta minus cot square theta equal to 1, and we know that 1 plus tan square theta equal to sec square theta equal to, and sec square theta minus tan square theta equal to 1. जहाँ पे जैसी नीड होगी वैसा वैसा चेंज करते रहेंगे. we know that sin square theta plus cos square theta equal to 1. हमने आपको पहले ही बताया जहाँ पे जैसे नीड होगी वहाँ से वैसा वैसा चेंज करेंगे. अभी तो मैं केवल इंट्रोडक्शन इनके बारे में बता रहा हूँ, अभी इसको क्वेश्चन सॉल्व करूँगा. तो जहाँ पे जैसे नीड होगी इसको वी कैन राइट डिफरेंट फॉर्म. इफ़ यू फाइंड cos square theta equal to, then we can write sin square theta, and sin square theta equal to 1 minus cos square theta. ये सब हमने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया. मैं अपनी नई वीडियो में इसके बेसिस पे जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको करा दूंगा. थैंक यू.